Hello, dear friends and viewers. Assalamu alaikum. I, Pleader Javed Ali Selro, High Court. Once again, I am in front of you to share the essential knowledge of the Constitution of Pakistan 1973. I called it essential knowledge because again and again I read it from the textbook of Constitution of Pakistan 1973. Of course, all the words which are present in the textbook of the Constitution, of course, this is the essential. So I again and again provide you the same which is present in this book. And these all words are not my own words. Whatever I gain from the textbook, I am not sharing that knowledge that by myself I just managed or maintained the thing which I understand and I provided you about the understanding. I am not doing so. I just change all the things. मैंने सब कुछ चेंज कर लिया कि यार चलो क्यों ना अपना एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि मुंतखब हो, तो कम से कम वो एक मानायती तो हो और स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए. ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है वो एसेंशियल है, क्योंकि उसी से ही हमने जो है अपना हासिल की है तालीम या नॉलेज जो कॉन्स्टिट्यूशन की है. तो उसी टेक्स्ट बुक को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने हर बार जो है अपना आगाज़ करता हूँ और अपना एक्सप्लेन करके बताता हूँ, अपना वजाहत करता हूँ कि आप तक ये मैं जो नॉलेज है ये मैं पहुँचा सकूँ. तो again we are going to enjoying from the reading of the textbook of the Constitution of Pakistan 1973 about the understanding of the knowledge of this textbook in presence of the articles कि ये आर्टिकल क्या कहता है, कितने आर्टिकल्स है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है. तो चलो अपना एंजॉय करने के लिए मूव ऑन होते हैं. सो लेट्स कम टुगेदर विद मी एंड लिसन इट केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल, link I provided you. After that you may be updated from all the lectures about the Constitution of Pakistan 1973. तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद जो है रहनुमाई मिलती रहे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आगाज़ किया है तो उसको कंप्लीट करने तक आप जुड़े रहिएगा. डोंट मूव ऑन हेयर एंड देयर. लेट्स कम. सो लेट्स रिकॉल द मेमोरी. अपना प्रीवियस लेक्चर्स को याद करने की गर्ज से मैं थोड़ा अपना बताता चलूं कि हम इस वक्त मौजूद हैं पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. जो पार्ट 4 है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जो है प्रोविंसेस पे डिपेंड करता है. फर्दर मोर पार्ट 4 में जो पहला चैप्टर था हमने पढ़ा था, उस पहले चैप्टर में जो आर्टिकल्स थे वो कंसिस्ट ऑन द आर्टिकल 101 to 105. That was about the first chapter and which was about all articles about the governor. प्रोविंसेस के बारे में ये अपना पार्ट है जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का. और जो चैप्टर 1 है वो गवर्नर्स पे मुश्तमिल है, जो आर्टिकल कंसिस्ट करते हैं 101 to 105. ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है. फर्दर मोर एक नेक्स्ट चैप्टर आ गया था, चैप्टर सेकंड विच वाज डिपेंड ऑन दी प्रोविंशियल असेंबलीज को भी हमने पढ़ा था. और प्रोविंशियल जो असेंबलीज चैप्टर 2 में था वो आर्टिकल कंसिस्ट करता था 106 to 127 आर्टिकल्स. ये प्रोविंशियल असेंबली के बारे में हमने पढ़ा था 106 आर्टिकल टू 127 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विच वाज अबाउट दी चैप्टर 2. और आफ्टर दैट चैप्टर 2 के बाद हमने एक टॉपिक आया था, चैप्टर 2 में ही था, टॉपिक आया था वो था आर्डिनेंस के बारे में. तो आर्डिनेंस विच वाज ओनली कंसिस्ट ऑन अ सिंगल आर्टिकल, दैट वाज आर्टिकल 128 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. तो आर्डिनेंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया था. तो अभी हम मूव ऑन हो रहे हैं. ये शॉर्ट एक अपना ब्रीफ एक इंटरव्यू था जो है अपना रिकॉलिंग मेमोरी के हवाले से, जो पिछले अपना लेक्चर्स में मैंने आप तक नॉलेज पहुंचाने की कोशिश की थी. तो ये एक इसी गर्ल्स के मुताबिक मैंने अपना रिकॉल करवाया. अभी हम चलते हैं, मूव ऑन होते हैं. अपना एक नया चैप्टर आने वाला है उसी पार्ट 4 का, जो कि चैप्टर 3 है. चैप्टर 3 द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स चैप्टर 3 है ये, क्योंकि चैप्टर जो है अपना सेकंड को तो हमने पढ़ा था प्रोविंशियल असेंबलीज के बारे में. अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट चैप्टर 3. सो लेट्स मूव. तो ये जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर है पार्ट 4 का, वो कंसिस्ट करता है आर्टिकल 129 to 140A तक.
ये चैप्टर 3 के आर्टिकल्स हैं, तो चलो अपना इसको जो है पढ़ लेते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आई अगेन टेल यू दैट फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आई शेयर द नॉलेज विच इज ऑफ कोर्स द एसेंशियल नॉलेज। सो लेट्स मूव। आर्टिकल 129 of Constitution of Pakistan 1973, the provincial government. Okay, Article 129 sub-article 1, subject to the Constitution, the executive authority of the province shall be exercised in the name of the governor by the provincial government. बिल्कुल आसान लिखा हुआ है कि जो अथॉरिटी है प्रोविंस की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो एक्सरसाइज होगी गवर्नर के नाम से, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहलाएगी। कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर, वेरी नाइस, जिसपे अपना चीफ मिनिस्टर भी मुश्तमिल है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात हो रही है उसी के हवाले से। एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी अपना इसमें मौजूद हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात हो रही है उसी के हवाले से मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 129, विच शैल एक्ट थ्रू द चीफ मिनिस्टर, जो कि अपना एक्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर के थ्रू। Article 129 sub-article 2, in the performance of his functions under the constitution के मुताबिक इनके जो functions है परफॉर्मेंस वो उसके हवाले से the chief minister may act either directly or through the provincial minister। जो कि चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला है सूबे का, वो जो है डायरेक्टली भी अपना एक्ट कर सकता है या थ्रू दी जो है अपना चीफ मिनिस्टर। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 129 का सब आर्टिकल 2 है। वेल, इट इज़ वेरी सिंपल। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर आर्टिकल 130 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, द कैबिनेट। सो सब आर्टिकल 1 ऑफ आर्टिकल 130, देयर शैल बी अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट है वो मिनिस्टर की कैबिनेट होगी। with the chief minister at its head, जिस मतलब चीफ मिनिस्टर के साथ साथ उसका हेड। टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, वेरी सिंपल, टू एड एंड एडवाइज टू द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। ये कैबिनेट की बात हो रही थी। Sub article 2 of article 130, the provincial assembly shall meet on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held, unless sooner summoned by the governor. Sub article 3 of article 130, after the election of the speaker and the deputy speaker, the provincial assembly shall, to the exclusion of any other business, proceed to elect without debate one of its members to be the chief minister. Sub-article 4 of article 130, the chief minister shall be elected by the votes of the majority of the total membership of the provincial assembly. ये elected chief minister के बारे में है, सब कुछ लिखा हुआ है। Provided that, furthermore, provided that if no member secured such majority in the first poll, a second poll shall be held between the members who secure the two highest number of votes in the first poll and the member who secures the majority of votes of the members present, and voting shall be declared to have been elected a chief minister. Provided further that if the number of votes secured by two or more members securing the highest number of votes is equal, further polls shall be held between them until one of them secures a majority of votes of the members present and voting. Sub-article 5 of article 130, the members elected under class 4 shall be called upon by the governor to assume the office of chief minister, and he shall, before entering upon the office, make before the governor oath in the form set out in थर्ड शेड्यूल। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि अगर ओथ का नाम आ जाए तो आपका माइंड डायरेक्टली रिकॉल होना चाहिए कि ये थर्ड शेड्यूल होगा, क्योंकि ऑफकोर्स थर्ड शेड्यूल में सारा ओथ के बारे में प्रेजेंट है।
पूरी डिटेल्ड अपना उसमें डिटेल है, तो वो अपना फाइनली मैं बताऊंगा उसके बारे में डिफाइन करके। बट आपको मैं जस्ट एक जो है टास्क दे रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को देख लिया करें कि थर्ड शेड्यूल डिपेंड ऑन दी ओथ। वेल, सब आर्टिकल 5, no. Further also provided that in sub-article 5 of article 130, there shall be no restrictions on the number of terms of the office of the chief minister. Sub-article 6 of article 130, the cabinet shall be collectively responsible to the provincial assembly, and the total strength of the cabinet shall not exceed 15 members or 11% of the total membership of a provincial assembly, whichever is higher, provided that the aforesaid limit shall be effective from the next general elections after the commencement of the Constitution 18th Amendment Act 2010. Sub article 7 of article 130, the chief minister shall hold office during the pleasure of the governor. ऑफ कोर्स जो चीफ मिनिस्टर है, हेड तो अपना गवर्नर ही है अपना प्रोविंस का, तो जो चीफ मिनिस्टर है प्लेयर करेंगे ऑफिस को, अपना गवर्नर की अपना प्लेयर पे अपना ऑफिस को होल्ड करेंगे. बट द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर्स under this class unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly. Sub article 8 of article 130, the chief minister may by writing under his hand addressed to the governor resign his office. अगर चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करनी है अपनी डेजिग्नेशन से, तो वो अब अंडर हिज हैंड राइटिंग गवर्नर को जो है अपना सब आर्टिकल 9 ऑफ आर्टिकल 130, द चीफ मिनिस्टर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस. वेरी सिंपल था, ये मैंने आपको बताया. Sub article 9 of article 130, a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of a provincial assembly shall, at the expiration of the period, cease to be a minister and shall not before the dissolution of that assembly be again appointed a minister unless he is elected a member of that assembly. Sub article 10 of article 130, nothing contained in this article shall be construed as disqualifying the chief minister or any other minister for continuing in office during any period during which the provincial assembly stands dissolved, or is preventing the appointment of any person as chief minister or other minister during any such period. Sub article 11 of article 130, the chief minister shall not appoint more than 5 advisors. more than 5 advisors, चीफ मिनिस्टर को अपना अख्तियार नहीं है कि वो अपना more than 5 advisors को अपॉइंट करे. According to article 130 sub article 11. So it has been completed. Now 131 article of Constitution of Pakistan 1973, governor to be kept informed. The chief minister shall keep the governor informed on matters relating to provincial administration. चीफ मिनिस्टर गवर्नर को इन्फॉर्म करेंगे अगर जो मैटर्स हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, एंड ऑन ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स है उसके बारे में भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली. गुड. 132 article of Constitution of Pakistan 1973, provincial ministers, sub article 1, subject to class 9 and 10 of article 130, जो कि हमने अपना पहले भी पढ़ा. The governor shall appoint provincial ministers, जो गवर्नर है वो provincial ministers को अपॉइंट करेंगे from amongst members of the provincial assembly on the advice of the chief minister, जो कि एडवाइस चीफ मिनिस्टर को मद्देनजर रखते हुए उनको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर की बदौलत. Sub article 2 of article 132, before entering upon office a provincial minister shall make before the governor oath. जो प्रोविंशियल मिनिस्टर होगा वो जो ओथ उठाएंगे गवर्नर की प्रेजेंस में, गवर्नर के सामने उठाएंगे ओथ,
in the form set out in the third schedule. Of course oath आ गया तो third schedule में ही present है सारा कुछ oath के बारे में. So sub article 3 of article 132, a provincial minister may by writing under his hand addressed to the governor resign his office or may be removed from office by the governor on the advice of the chief minister. Very simple and very authentical. Article 133, chief minister continuing in office, the governor may ask the chief minister to continue to hold office until his successor enters upon the office of chief minister. Article 134, 135 are omitted. Now we are moving towards Article 136. Vote of no confidence against chief minister. Sub-article 1 of Article 136. A resolution for a vote of no confidence moved by note less than 20% of the total membership of the Provincial Assembly may be passed against the chief minister by the Provincial Assembly. Sub-article 2, a resolution referred to in class 1 shall not be voted upon before the expiration of 3 days or later than 7 days from the day on which such resolution is moved in the Provincial Assembly. Sub-article 3 of Article 136, if the resolution referred to in class 1 is passed by the majority of the total membership of the Provincial Assembly, the Chief Minister shall cease to hold office. Article 137, extent of executive authority of province. Subject to the Constitution, the executive authority of the province shall extend to the matters with respect to which the Provincial Assembly has power to make laws, provided that in any matter with respect to which both Majlis-e-Shura, Parliament and the Provincial Assembly of a province have power to make laws, the executive authority of the province shall be subject to and limited by the executive authority expressly conferred by the Constitution or by law made by Majlis-e-Shura, Parliament upon the federal government or authorities thereof. Article 138, conferring of functions on subordinate authorities. Wow. On the recommendation of the provincial government, the Provincial Assembly may by law confer functions upon officers or authorities subordinate to the provincial government. Article 139, conduct of business of provincial government. Sub-article 1 of Article 139, all executive actions of the provincial government shall be expressed to be taken in the name of the governor. Sub-article 2, the provincial government shall by rules specify the manner in which orders and other instruments made and executed in the name of governor shall be authenticated, and the validity of any order or instrument so authenticated shall not be questioned in any court on the ground that it was not made or executed by the governor. Sub-article 3, the provincial government shall also make rules for the allocation and transaction of its business. Article 140, very important article of Constitution about the province, as we are on the part 4, it is about the province, तो very important है 140 article. जैसे हमने फेडरल में 100 पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट था, अटॉर्नी जनरल था जो कि पाकिस्तान का, तो अभी हम अपना 140 आर्टिकल में उसी को ही अपना थोड़ा मैं रेफरेंस दिया मैंने. बाकी ये 140 आर्टिकल का एक अपना जो है स्टेटमेंट है, सुनिएगा आप. एडवोकेट जनरल फॉर अ प्रोविंस 140 आर्टिकल में है. सब आर्टिकल 1, द गवर्नर ऑफ ईच प्रोविंस शैल अपॉइंट अ पर्सन. हर सूबे में जो गवर्नर है बंदे को अपॉइंट करेंगे. ये एडवोकेट जनरल की बात हो रही है 140 आर्टिकल में. बीइंग अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द हाई कोर्ट टू बी द एडवोकेट जनरल फॉर द प्रोविंस. गुड. सब आर्टिकल 2 ऑफ आर्टिकल 140, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉन सच लीगल मैटर्स. ये जो है एडवोकेट जनरल की ड्यूटी में शुमार है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो लीगल एडवाइस देंगे किसी लीगल मैटर्स में, एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर, और जो भी अपना ड्यूटीज हैं लीगल कैरेक्टर्स के हवाले से उनको परफॉर्म करना है. इज मे बी रिफर्ड आर असाइंड टू हिम बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट.
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनको एडवोकेट जनरल को रेफर्ड करेंगी, उनकी वो ही अपना ड्यूटीज़ और फंक्शंस को परफॉर्म करने का जो है अपना सारे पावर्स इसमें दिए गए हैं। सब आर्टिकल 3 ऑफ आर्टिकल 140, द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर। तो एडवोकेट जनरल सरकार जो है वो ऑफिस को जो होल्ड करेंगे प्लेयर ऑफ द गवर्नर से ही करेंगे। और फर्दर मोर सब आर्टिकल 4 ऑफ आर्टिकल 140, the advocate general may by writing under his hand address to the governor resign his office। of course गवर्नर को एड्रेस ही करेंगे जैसे अपनी हैंड राइटिंग में कि रिजाइन कर रहे हैं ऑफिस से। फर्दर मोर आर्टिकल 140A, लोकल गवर्नमेंट, each province shall by law establish a local government system and devolve political, administrative and financial responsibilities and authority to the elected representatives of the local governments। Sub article 2 of article 140A, elections to the local governments shall be held by the election commission of Pakistan। So part 4 has been completed and part 4 contain 3 chapters and consisting on the article which was starting, it is about the part 4 101 to 140A। these articles consist in part 4 article part 4 part of Constitution of Pakistan 1973। so part 4 has been completed। पार्ट 4 को हमने मुकम्मल कर दिया जो कि 3 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है, जिसके आर्टिकल्स हैं 101 से लेकर 140 तक 140A तक अपना आर्टिकल कंसिस्ट करते हैं। तो होप सो यू अंडरस्टैंड। मुझसे जितना हो सका मैंने मॉडिफाई किया। फर्दर मोर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द ग्रीवियंस अबाउट द अंडरस्टैंडिंग यू मे कमेंट मी, यू मे आल्सो आस्क फ्रॉम मी वट एवर यू वांट, वट एवर यूर नीड। तो कमेंट कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नंबर वहाँ पे अपना कमेंट बॉक्स में मौजूद है। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे और मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थ्रू द टेक्स्ट आई आल्सो 24/7 आवर्स आई आल्सो अलर्ट एंड आई वुड लाइक टू शेयर द एसेंशियल नॉलेज अगेन एंड अगेन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ यू डियर्स व्यूअर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपको मैं अपना पार्ट 5 में लेके चलूँगा, वो अभी पेंडिंग है। दिस इज सरप्राइज फॉर यू ऑल, सो वेट फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।